Now, before solving this case, let us try to learn some basic concepts. Yesterday already we have discussed about some basic things about central nervous system and neurotransmitters which are important in physiology of sleep as well as in some behaviors. We have discussed about CNS stimulation and CNS depression. Anyways, so in today's class we'll totally focus on pharmacology. We'll try to discuss in detail about the pharmacology of certain drugs which will act on central nervous system. Okay, so see, in previous class what we have seen, in previous class we have discussed about neurotransmitters. Okay, and we also have discussed about the clinical presentations, what happens if cns is stimulated, or we have seen the clinical presentations of CNS stimulation. We have also seen the clinical presentations of cns depression. Okay, stimulation and depression. And then we, at the end, we have seen about sleep, patterns of sleep, patterns of sleep and sleep disorders, right? Till here we have already covered in the previous classes. Clear? So in today's lecture we will be focusing mainly on hypnotics and sedatives. Hypnotics and sedatives, right? In yesterday's class also I explained the definition of hypnotic, what is hypnotic and what is a sedative. Before understanding the pharmacology of these drugs, we should understand the sleep pattern. Yesterday briefly I explained you about random eye movement sleep and non-random eye movement sleep. And in non-random eye movement sleep we have 4 different stages. So totally sleep pattern contains 5 different stages. Okay, 5 stages of sleep. Actually stages may we have in non-random sleep, non-random eye movement sleep, we have 4 stages. See, when patient goes to sleep, immediately, see, when we sleep 5 to 10 minutes ke baad we will enter into stage 1. Okay, we will enter into stage 1 sleep, and from stage 1 slowly we will go to stage 2. Stage 2 is the major stage of sleep. Yesterday we discussed, because why it is major, because majority of time, more than 40-50% of time is spent in stage 2 only. Okay, because most of the time patient will be spending time in this stage only, that's why it is major stage. And after stage 2 what happens, the patient will go to stage 3 and finally stage 4. फिर stage 4 के बाद patient will reverse, patient will come to stage 3, stage 2 and again stage 1. And from stage 1 sometimes what happens, patient will immediately go to random eye movement. Random eye movement will be coming twice thrice, frequently it will be coming. Okay, suddenly क्या होता, stage 1 stage 2 stage 3 stage 4 में रहता patient, and after stage 4 again patient comes to 3 4, and suddenly what happens, patient will be in anxiety, patient will be facing some chasing dreams and all. So patient will have random eye movement. हर एक patient में random eye movement sleep रहता, and this random eye movement will stay from 5 minutes to 30 minutes. It depends from patient to patient, but mostly 5 6 minutes तक रहता, and immediately it will disappear, and again patient will go to stage 1 stage 2 stage 3. This cycle will be continuing all over the night for 7 to 8 hours. Okay, एक एक बार क्या होता, sometimes patient from stage 1 to random eye movement, patient comes to random eye movement, and suddenly in random eye movement patient will wake up. Okay, patient को घबरा घबरा हो जाते रहता. So yesterday I already discussed all these things, just for revision I am telling. So the study of the sleep patterns is called hypnogram. See, why it is important for us to study hypnogram is because before starting sedatives and before starting hypnotics, we should understand the sleep pattern of every patient. If the sleep stages are decreased in the patient, stage 1 stage 2 stage 3 stage 4, ये पूरे एक 3 घंटे में चलना. Actually ये 3 घंटे या 2 hours or 3 hours it should stay in the body. But in some patients what happens, immediately from stage 1 patient goes to stage 2, from stage 2 3 4, and finally again patient will come to stage 1. So the stages, the duration is decreasing in certain patients, and through that what happens, immediately patient will be wakened, and that condition is called insomnia. बार बार उठते रहता, नींद नहीं आती. Why? Because the duration of the stages in those patients are very limited or very much decreased. Okay, so to understand the sleep pattern it is important to prescribe sedatives and hypnotics. Anyways, these all things we will not be discussing in detail. We are mainly focusing on drugs. Okay, drug के बारे में डिटेल में पढ़ते, what are its indications, what are its adverse effects, what are its drug interactions and pharmacological doses and all. We'll try to understand the drugs. Okay, so first, before understanding the pharmacology of drugs, we should know what is insomnia.
you should know what is insomnia. Insomnia is nothing but difficulty in either falling asleep or remaining asleep. Remaining asleep means नींद नहीं आती. Patient will be just simply patient will be sleeping on the bed, but patient will not get sleep. एंड ऑलवेज पेशेंट विल बी रिफ्रेश फ्रॉम स्लीप. पेशेंट ये बोलते रहता कि अब मेरे को नहीं सोना है, अब नींद नहीं आ रही. पेशेंट को टायर्डनेस नहीं रहता. ओके, ऑलवेज पेशेंट विल बी रिफ्रेश्ड फ्रॉम स्लीप. सो एनी ऑफ दिस सिम्टम इज कंसिडर्ड एज इंसोम्निया. इंसोम्निया रिफर्स टू डिफिकल्टी इन एदर फॉलिंग एस्लीप. सोने के लिए नींद जल्दी पकड़ नहीं पाता पेशेंट. पेशेंट कांट कैच दिस स्लीप, दैट इज कॉल्ड फॉलिंग एस्लीप. Okay, difficulty in sleeping, remaining asleep, and falling refreshed, feeling refreshed in sleep is the definition for insomnia. Simply, insomnia is nothing but difficulty in sleep or inappropriate sleep. तो देखो, अब insomnia के causes क्या है? I think we didn't see in yesterday's class. What are the causes for insomnia? This is very very important slide. Insomnia के causes क्या हो सकते हैं? Insomnia के causes क्या होते हैं? देखो, if anybody is if anybody is having chronic pain, cancer pain or accidental pains, injury pains, or if patient is having some fractures, okay, fracture pain, yeah, rheumatoid arthritis pain, osteoarthritis pain, okay, osteoporosis pain, ये सब if patient is having chronic pain. chronic pain वाले को रात में नींद नहीं आएगी ना, रात में पेन दर्द देते रहता, तो it is very difficult to sleep. So this is one simple reason. Next, gastric reflex. Gastric, do you know about GERD? Have you heard about GERD? गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिसीज बोलते. ओके, पेशेंट को इंडाइजेशन रहता, स्टमक एक रहता, ब्लोटिंग रहता, और रिफ्लेक्सेस अंदर से बाहर निकलते रहता. सो इवन दिस आल्सो समटाइम्स इट विल डिस्टर्ब द पेशेंट इन स्लीप. ओके, गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स. एंड अनकंट्रोल्ड आस्थमा, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आस्थमा पेशेंट में रात में क्या होता, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होते रहता, वीजिंग्स आते रहता, पेशेंट विल बी फीलिंग एपनिया, अनेबल टू ब्रीथ एयर प्रॉपरली. ओके, चेस्ट पेन होते रहता है एक बार. दिस इज आल्सो अनदर रीजन फॉर insomnia. And see, sometimes external stimuli. बेडरूम में सोने के लिए जाते हैं और बाहर से नॉइस, बिग बिग नॉइज, ड्रिलिंग नॉइसेस, व्हीकल नॉइसेस, ट्रैफिक जाम नॉइसेस, ये सब होते रहता. तो इवन दैट आल्सो, एक्सटर्नल स्टिमुलाई आल्सो विल डिस्टर्ब सम पेशेंट्स. एंड ब्राइट लाइट्स आल्सो. सम पेशेंट्स, यू नो, if light is switched on in the room, they will not get sleep. Okay, so even that is also one reason for not getting sleep, for causing insomnia. Even that is also one reason, it is a cause. Okay, and sometimes extreme temperatures, extreme cold climate conditions or extreme hot climate conditions. अगर फैन नहीं है extreme hot climate conditions में, अब अपने को फैन या AC, or if anything not there, see in Vadodara actually in summer without fan or without AC we can't sleep. Even that is also one important reason for insomnia. And in cold climate conditions, freezing conditions में, without what we say, without in Telugu we called dupatlu, in Hindi what we say, पूरे आई डोंट नो द टर्म. एनीवे, वो अपन ओढ़ के सोते ना जी, हाँ, कंबल या ऑल दिस सब्सटेंसेस, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर बेटर स्लीप. ओके, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लैंकेट्स, यस, वेरी गुड. ओके, डबल डबल ब्लैंकेट्स चाहिए अपने को कोल्ड क्लाइमेट कंडीशंस में फॉर गेटिंग प्रॉपर स्लीप. अगर ब्लैंकेट नहीं है तो ठंडी में नींद आती ज नहीं. इवन दैट इज ऑल्सो वन रीजन फॉर इंसोम्निया. एंड समटाइम्स एंग्जाइटी. एंग्जाइटी ऑल्सो मे डिले. पेशेंट को घबरा घबरा रहता, कल एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम टेंशन से थोड़े लोगों को नींद नहीं आती, और थोड़े लोगों को कल मेरी मैरिज है, नींद नहीं आती, और कल एक बड़ा सम बिग अनाउंसमेंट इज़ देयर, पीपल विल नॉट गेट स्लीप. ओके, सो anxiety also is one reason for not getting sleep. Okay, and so these are some basic causes, these are very 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 basic causes for insomnia. Now there are some drugs, which will cause insomnia. Insomnia के drugs क्या हो सकते हैं बोलो? Yesterday I told what are the causes for insomnia, drug related causes for insomnia. Can anyone tell me one drug? Yesterday I told. Yes, very good. Simple. CNS stimulants, all CNS stimulants will cause insomnia. सिंपल सी बात. उसमें CNS stimulants जो भी है, तो देखो, अब ये सब CNS stimulants है. कौन से? नंबर वन, वेरी इंपॉर्टेंट, कैफीन, निकोटीन एंड थियोफिलिन. कैफीन, निकोटीन एंड थियोफिलिन, दिस आर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सर्टन ब्यूरेजेस. अपन कॉफी पीते, okay, we take some cool drinks or soft drinks, in that sometimes nicotine is there, and theophylline is the very basic drug in tea and in coffee. Okay, caffeine, nicotine and theophylline, these are the basic CNS stimulants which are present in beverages. Okay, कॉफ़ी के अंदर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोका कोला, कोक के अंदर, थम्स अप के अंदर,
usually this drugs are they are the major, not major, but small quantity of these drugs are mixed with those beverages. Okay. And sympathomimetic amines, sympathomimetic amines examples क्या है? Noradrenaline, adrenaline, corticosteroids, sometimes not corticosteroids but directly sympathomimetic amines में noradrenaline. Okay. Yes, and some antidepressants, some antidepressants. Levothyroxine is very important, याद रख लो. If anybody is having hypothyroidism, hypothyroidism patients में overdoses of levothyroxine may show CNS stimulant effect and it will cause insomnia. Why? Can anyone tell me why levothyroxine causes insomnia? Anybody from the class? Why levothyroxine causes insomnia? Very good, very good. Simple. Levothyroxine directly goes and acts, it increases sympathetic system. I told levothyroxine has direct action on stimulating sympathetic nerves, or it will increase the sensitivity of noradrenaline. Levothyroxine increases the sensitivity of noradrenaline. Clear? ये चीज़ याद रख लो. And some antimuscarinics. Can anyone tell me the examples of antimuscarinics? Anybody from the class? Antimuscarinic drugs. Antimuscarinic drugs. Anybody? Antimuscarinic drugs are those drugs which will inhibit M1, M2, M3, M4, and M5. Muscarinic receptor activity. Very good. Someone is telling. Very good. Very good. Voice break नहीं हो रहा है. People are giving the answers. Everybody mute your mic. Okay, चलो सुनो. Antimuscarinics में examples क्या है? Atropine and atropine derivatives. Atropine and atropine derivatives. Atropine, hyoscine, dicyclomine, ipratropine bromide, tiotropium bromide, pyranozepine. All these are the examples of antimuscarinics. Muscarinic agonist and antimuscarinics के बारे में जब पढ़ते हैं अपन, we will discuss in detail about these drugs. Okay, we have not started that. Actually, parasympathetic nerves, sympathetic nerves वहाँ पे आएगा. In that we will discuss. Okay, so these are the drugs, common drugs which will cause insomnia. यहाँ देखो, if these drugs are using by the patient, it is not compulsory कि these drugs will cause insomnia. See, when patient is taking these drugs, it depends from the patient and it also depends on the dose, how much patient is taking. Okay, patient को insomnia होने के chances है, but definitely cause करता करके नहीं है. Clear everybody? Okay, and some other drugs like cocaine, amphetamines. Amphetamine तो अगर ये लिए तो compulsory patient को insomnia आएगा because it is a strong CNS stimulant. And sometimes anabolic steroids. Anabolic steroids also causes insomnia. And see, actually hypnotics and anxiolytics. Hypnotics and anxiolytics are the drugs which are used for sedation purpose. Actually अपन ये hypnotics and anxiolytics are given to cause sleep. But sometimes if these drugs, hypnotics and anxiolytics, are suddenly stopped, so what they will cause? They will cause withdrawal symptoms. So drug withdrawal के वजह से भी patient को insomnia हो सकता है. Clear? So hypnotics also will cause insomnia if they are suddenly stopped. If they are suddenly stopped, hypnotics, sedatives, anxiolytics, alcohol, okay, all these drugs, what they do, they will cause rebound insomnia. Rebound insomnia is nothing but a patient is suffering with insomnia. Okay, a person is suffering from insomnia and we gave either sedative or hypnotic. Okay, sedative or hypnotic. Suddenly we stopped sedative or hypnotic. So what happens? जो insomnia पहले था patient को, फिर से patient को insomnia आ जाएगा. That is called rebound insomnia. Clear? And sometimes patient will have post traumatic stress disorder, PTSD. सब लोग ध्यान दो यहाँ पे, this is very important. See, it is a psychological condition where patient will not get appropriate sleep. I mean, patient will be having insomnia. Why? पुराने ज़माने में कभी कभी, या when patient is in childhood, or when patient is in some past medical history में, if patient had some strong stress related situation, if देखो अब थोड़े थोड़े गर्ल्स में क्या होता, ड्यू टू फैमिली ट्रामा, उनके मदर बहुत मारते रहते, फादर बहुत मारते रहते, सडनली मदर डेथ होना, फादर डेथ होना, और कोई लव्ड वन इमीडिएटली मिस हो जाना, और some women, some girls will be experiencing rape victim रहते थोड़े patients. So all these are stress related situations in their past. तो क्या होता, suddenly when they sleep, immediately those traumatic memories पूरे याद आ जाते पेशेंट को. तो सडनली क्या होता, पेशेंट को सडनली नींद में से उठ जाते.
सो दैट टाइप ऑफ कंडीशन, घबरा में रहते पेशेंट, डरते रहते, वो सिचुएशन को याद करते रहते, कभी कभी माइंड में वो डर ऐसा ही रहता, दैट टाइप ऑफ सिम्टम, इट इज साइकोलॉजिकल कंडीशन, इज कॉल्ड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. किसी को है किसी को है वो पोस्ट ट्रॉमेटिक? यस यस. अच्छा, अंजी रेड्डी. अच्छा अच्छा, आई डोंट रिमेंबर. एनीवेज, एनीवेज विल अच्छा अच्छा, okay okay okay, very good, very good. So Anji Reddy was having this condition, it seems. We don't know the reason, but at the end of the lecture we'll try to discuss this because it is recording now. అది మీరు మాట్లాడితే దీంట్లో సరిగా రికార్డ్ కాదు, దట్స్ వై ఐఎమ్ स्टॉपिंग यू टू आंसर. एनीवेज, एट द एंड वी विल ट्राई टू डिस्कस दिस केस. ओके, आप लोगों को समझ में आ गया ना पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर क्या है? ओके, तो इवन दिस इज ऑल्सो वन कॉज फॉर कॉजिंग इंसोमिया. नाउ यू सी, sometimes some other disorders, sometimes some other disease conditions, like patient will be having myoclonus और मजिल ट्विचेस बोलते, मजिल ट्विचेस और मजिल पेन, और समटाइम्स व्हाट विल हैपन, फ्रीक्वेंट मजिल्स के अंदर पेन आते रहता है पेशेंट को. ओके, दैट इज़ वन कंडीशन. ये इसके वजह से भी पेशेंट को इंसोम्निया रहता है. एंड समटाइम्स पेशेंट विल हैव रेस्टलेस लेग सिंड्रोम. देयर इज अनदर कंडीशन कॉल्ड रेस्टलेस लेग सिंड्रोम. एक्चुअली ये क्या है? When patient tries to sleep, patients all leg muscles will be paining or leg muscles will be contracting rapidly. That is also sometimes causes insomnia. And muscle cramps, it is related to muscle cramps. And there is another condition called bruxism. सुने नाम कभी? bruxism, have you heard about bruxism? कोई सुने bruxism के बारे में? Anybody? हाँ, यस, विक्की. ब्रुक्स, हाँ, क्या होता है बोलो. एग्जैक्टली सेम. ब्रुक्सिज्म इज द कंडीशन वेयर पेशेंट विल बी ग्राइंडिंग द टूथ, दांत से चबाते रहता, दांत हिलाते रहता, बाइट करते रहता. ओके, दिस कंडीशन इज कॉल्ड ब्रुक्सिज्म. ब्रुक्सिज्म की वजह से भी पेशेंट को इंसोमिया होने के चांसेस है. एंड हेड बैंगिंग, सिर मार लेते रहता पेशेंट, दिस इज ऑल्सो वन कंडीशन. एंड स्लीप अपनिया, मोस्टली सीन इन सीओपीडी एंड आस्थमा. ओके, ऑल दीज आर साइकोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल डिसीज कंडीशंस. In these disease conditions also patient will have insomnia. Just try to remember all these disease conditions. Patient may have insomnia in all these disease conditions. एक एक disease condition का बारे में फिर अपन डिस्कस करना शुरू कर दिया तो it will take lot of time. These are just causes for insomnia. I think insomnia causes is clear to you all. Okay? Yes? Now we will try to go with the treatment of insomnia. Insomnia का treatment क्या हो सकता है? See, initially whenever patient comes to the hospital, being a clinical pharmacist, always we should try to limit the usage of drugs. We should try to minimize the drug use. Always we should try to minimize the drug use. That is the important role of clinical pharmacist. कोई पेशेंट डिसीज से आया, हर एक सिम्टम का एक एक दवाई दे दिए, मजिल पेन एक दवा, हेडेक एक दवा, गैस्ट्रिक इरिटेशन और एक दवाई, फीवर डोलो, मजिल कॉन्ट्रैक्शन एंटी एपिलेप्टिक, सेडेटिव, हिप्नोटिक, ऐसे देते गए तो पेशेंट विल बी टेकिंग 10 to 12 ड्रग्स एवरी डे. सो इवन दैट विल कॉज हेपेटाइटिस और सम अदर एडवर्स इफेक्ट्स एंड ड्रग इंट्रैक्शन सब होने के चांसेस है. दैट्स वाई क्लिनिकल फार्मासिस्ट ऑलवेज व्हाट वी हैव टू ट्राई टू डू इज whenever patient is been prescribing with certain drugs, we should try to limit the doses or we should try to limit the use of drugs. That will be our ultimate goal. Clear? दवाई बेचना अपना काम नहीं है, दवाई देना अपना काम नहीं है, दवाई कम करना अपना काम है. Okay, by giving minimizing doses or minimizing drugs, we should be able to treat the patient's condition. They are called good doctors. Okay, चलो देखो, अब देखो अपन ट्रीटमेंट देने से पहले, बिफोर स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट, इन ट्रीटमेंट वी हैव टू ऑप्शंस. नंबर 1 नॉन फार्माकोथेरेपी and number 2 pharmacotherapy. So initially always try to treat the patient without giving drugs. Actually without giving drugs strategy works only in chronic conditions, not in acute condition. Acute condition में patient मरने को जा रहा है और आप जाके patient को non pharmacotherapy देंगे करके बोले तो it will not work out. Okay, so wherever pharmacotherapy is required, wherever non pharmacotherapy is required, based on the patient condition we have to decide. Okay, अब भी देखो पेशेंट acute अस्थमा से आके पेशेंट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ से मरने जाते रहता, and Krina will immediately remember Nayak sir was telling we have to start with non pharmacotherapy. So what she will do, she will go with diet therapy और पूरे non pharmacotherapy strategies पूरे अप्लाई करने की कोशिश करेगी. Meanwhile patient will die. Okay, so initially treatment we have to go with non pharmacotherapy wherever it is required or wherever it is
necessary. Okay, तो पहले क्या करना, we have to explain the sleep requirements to the patient, and if patient is having habit of caffeine intake or alcohol intake, advise the patient to stop them. And if patient is having pain, let them use analgesic. Just if patient is having pain, we have to use analgesic दिए, पेन कम हो गया तो sleep automatic आ जाता ना. So this is one strategy. And medications that cause insomnia, if any patient is taking some drugs which will cause insomnia, just now we have discussed all the drugs which causes insomnia, we should try to restrict those drugs. इंसोमनिया को कम करने के लिए वो दवाई कम कर दिया तो ऑटोमेटिक इंसोमनिया चला जाएगा ना. ओके, एंड साइकोलॉजिकल टेक्निक्स सच एज रिलैक्सेशन थेरेपी, काउंसलिंग द पेशेंट, एंड गिविंग द सीबीटी ट्रीटमेंट, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी बोलते. इफ पेशेंट इज हैविंग बैंगिंग सिर मार लेते रहता तो वी हैव टू एडवाइस ऐसा नहीं मार लेना करके वी हैव टू एडवाइस द पेशेंट. इफ पेशेंट इज हैविंग एंग्जाइटी की वजह से इंसोमनिया आ रहा है तो वी शुड ट्राई टू काउंसिल द पेशेंट टू डिक्रीज देयर एंग्जियस सिम्टम्स. सो इनिशियली वी शुड ट्राई विथ नॉन फार्माकोथेरेपी. अगर ये फेल हो गया देन व्हाट वी हैव टू गो, वी हैव टू गो विथ फार्माकोथेरेपी. इन फार्माकोथेरेपी वी हैव sedatives and hypnotics. sedatives are those drugs which will try to calm the patient or which will try to decrease the excitement in the patient. Excitement कम कर देता. And hypnotics are the drugs which will try to cause sleep, like natural sleep. They will cause natural sleep. Directly hypnotics क्या कर देते, directly sleep cause कर देते. If any patient is not getting sleep, एक hypnotic दे दो, sleep में चले जाता. And this type of, one more very important cause I want to tell you for insomnia. See, there are some people who will be doing certain jobs where patient will be shifting daytime nighttime, day night, एक बार night time में जाता, एक बार day time में जाता. So shifting change होते रहता. So what happens, sleep patterns बराबर नहीं रहता patient में. That is also very dangerous condition. Sleep pattern is always we have to follow. अपनी body already it will follow the sleep pattern. जब भी डे टाइम नींद चाहिए तो नींद नहीं आएगी ना. And whenever patient requires, when patient is doing night duty, and when patient wants to sleep at daytime, it will not come. And when patient works on daytime and he wants to sleep at night, वहाँ पे भी फिर प्रॉब्लम हो जाएगा. डे टाइम में सो जाता और नाइट टाइम में नींद नहीं आती फिर. Such in that conditions also patient will get insomnia. So in that conditions we have to particularly suggest hypnotics. अब रात में ड्यूटी करके आते, डे टाइम में नींद नहीं आती, एक हिप्नोटिक ले लिया और सो गया, 8 घंटे नींद आ गया, खलास. Okay, so like that we have to try to treat the patient. Now in today's class we will try to discuss about sedatives and hypnotics in detail, the examples of drugs, their pharmacological actions, how they are acting on the body, and how they show adverse effects and pharmacological actions in the body. Clear? Shall we start? Actual class starts here. Okay, are you all there? यहाँ पे सब लोग ध्यान देना. Are you all there? Everybody are following? Okay, so now we will try to see about the pharmacology of sedatives and hypnotics. See, everybody try to memorize these drugs. These drugs are very important, particularly for PharmD second year students. Already BPharm, PB students, third year, fourth year and fifth year students, you might have already, you have gone through these drugs, you have already studied. For them it is just a revision type class, and for PharmD second year students it is very new, right? अब देखो, sedatives hypnotics classification में first classification of drugs are benzodiazepines. याद रख लो, first is benzodiazepines. BZD बोलते, BZDs. Clear? In this we have diazepam, lorazepam. Diazepam and lorazepam are very, very, very important drugs. We have clonazepam, clobazam, chlordiazepoxide, oxazepam, temazepam, midazolam, and alprazolam. Very, very important drug. Midazolam, alprazolam, triazolam, flurazepam, and nitrazepam. Okay, in this you remember these two drugs, diazepam and lorazepam, and alprazolam. Diazepam and lorazepam are available as tablet forms as well as IV forms. That's why diazepam and lorazepam are drug of choice in acute epilepsy condition. Diazepam and lorazepam are available in IV form. IV form का मीनिंग क्या है? दे विल हैव रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन. सडनली अगर पेशेंट हॉस्पिटल में बेड पे है, सडनली पेशेंट डेवलप्ड सीजर्स, सडनली पेशेंट डेवलप्ड कन्वल्जन्स, तो इमीडिएटली आप क्या दोगे? Either diazepam or lorazepam. Preferentially lorazepam injections, lorazepam IV is given to the patient if patient has acute epilepsy, or there is a condition called
Status epilepticus. Status epilepticus. Have you heard about this status epilepticus? Status asthmaticus करके भी एक है. That means patient will have convulsions all the time. Convulsions continue आते रहते, continue आते रहते, रुकते नहीं. उसको क्या बोलते हैं? Status epilepticus बोलते हैं. So in that condition also, immediately we have to stop the patient's symptom. So injection forms देते हैं अपन. So lorazepam, diazepam are available and दूसरे भी रहते हैं and most of them are available in tablet form as well. And here alprazolam is very very effective drug as sedative and hypnotic. Slight small doses it will be useful as sedative and large doses will be used as hypnotics. And chronic use, always chronic use of alprazolam will be useful as hypnotic. Okay, so याद रख लो ये सब drugs diazepam, lorazepam, clonazepam एक बार देख के पढ़ो. I'll give you time. You try to read the names of the drugs in your mind, particularly for second year students. Trushant, Prajwal, Shivani, Krina. Okay. See, diazepam 5 mg IV form as well as tablet forms we have. Alprazolam tablets 0.5 mg tablets we have. Okay, these are very important. Alprazolam is very important. Okay, and lorazepam 2 mg tablets and lorazepam 1 mg 2 mg IV is also there. Okay, see, actually in vials we have 2 mg per ml, 20 mg per 10 ml, 40 mg per 10 ml. Okay, so each ml here, each ml contains 4 mg, and here this 1 ml contains 4 mg. Here 1 ml contains 10 means 1 ml contains 2 mg. This is 1 ml contains 2 mg and this 2 mg per ml. Okay, so like this it is available. Based on the patient's condition we will try to give the dose. Okay, single dose, multiple doses, it depends. वो भी discuss करते हैं अपन. Clear? ये names याद रख लो. Okay, done. Benzodiazepines के नाम याद हो गए सब लोगों को. Alprazolam, triazolam, flunazepam, all GPAMs or benzodiazepines. GPAMs के साथ जोलम करके भी आते हैं. GPAM एंड जोलम बोथ आर बेंजोडाइजेपिन्स. याद रख लो. थोड़े लोग कंफ्यूज आते हैं. डायाजिपाम जीपैम करके आता, जोलम करके आता. GPAM एंड जोलम बोथ आर बेंजोडाइजेपिन्स. एनीवेज वी आर नॉट मेडिसिनल केमिस्ट्री एक्सपर्ट, सो केमिकल स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप वो सब देखने की जरूरत नहीं है. थर्ड ईयर में जब आते हैं आप तो यू विल स्टडी दैट. Anyways, that is not that much required for clinical pharmacist. For research purpose, it is important. Anyways, तो second category क्या है? First category क्या था? Benzodiazepine था. Second category is barbiturates. Barbiturates. See, first category is benzodiazepine, right? Benzodiazepines. And second category is barbiturates. याद रख लो. In these both benzodiazepines and barbiturates are very very effective, very very tolerable and very very commonly used drugs as sedatives and hypnotics. याद रख लो, माइंड में याद रख लो. Between benzodiazepines and benzodiazepines are very commonly used as sedatives or hypnotics than barbiturates. Clear everybody? Now देखो, in barbiturates we have long acting, short acting and ultra short acting. There is a drug called phenobarbital. It is a long acting drug which is mainly available as tablet. यहाँ पे देखो 60 mg tablets, phenobarbital. And next we have short acting drug pentobarbital. Short acting drugs कभी भी usually IV form में if IV form is required or if emergency में देना पड़ेगा तो in that conditions we will go with pentobarbital or else we will not. Okay, in animal studies usually we go with barbiturates mainly. And the third one is ultra short acting. In that we have thiopentone and methotrexate. So these are again available in injection forms. Clear? So in barbiturates इसके अलावा दूसरे भी drugs है, phenobarbital, pentobarbital करके बहुत सारे drugs है. As of now you try to remember these drugs enough. Okay, barbiturate. इसके बारे में अब डिटेल में एक ड्रग के बारे में I'll explain you the mechanism and its interactions and all. Now next one is third type of drugs which are considered as, in classification they are considered as non-benzodiazepine hypnotics. They are not benzodiazepines, they are not barbiturates. They are non-benzodiazepine hypnotics बोलते. In that we have zolpidem, zopiclone, zaleplone and S-zopiclone. ये याद रख लो ये सब drugs. These are also not that much commonly used, but zolpidem and zopiclone they are commonly used sometimes. In US and all we use these drugs very commonly. If situation demands we will use or else no. But mainly benzodiazepines अपन hospital में use करते. उसके reasons also I'll tell you in next slide. Okay. So this is the third category of sedative and hypnotics. Okay. First category क्या था? Benzodiazepine. Second category barbiturate and third one is non-benzodiazepine hypnotic. And
Some other categories also we have, which will be used as hypnotics or sedatives. There is a drug called melatonin. इसके बारे में डिटेल में समझाता हूँ आपको. Melatonin. Have you heard about melatonin? Melatonin 10 mg tablet, 20 mg tablets are available. Melatonin, and we have Rameltion. Rameltion, here it is, 8 mg Rameltion, and we have Sorexant. Sorexant. Bill Somra करके brand name is there. 20 mg Sorexant tablets are available. So these are other sedatives and hypnotics. These are very rarely used because their safety and efficacy is not that much when compared with benzodiazepines. Clear? अब देखो, अब यहाँ पे सब लोग बहुत ध्यान से सुनना. Everybody should concentrate here. What is the mechanism? What is the mechanism of barbiturates, benzodiazepines, melatonins, and all? I will explain here. These classes, what I explained you, for better understanding, it will be very easy for us. See, I am trying to draw one presynaptic nerve or the nerve, and this is postsynaptic nerve. सब लोग ध्यान देना यहाँ पे. It's very important. Okay. This is the general nerve. This is presynaptic nerve, and this is postsynaptic nerve. Postsynaptic nerve. Okay. And here we have some other other nerves. They are considered as GABA nerve, or the nerve which will synthesize GABA particularly. Just this is the third. This is another nerve fiber. It is nerve fiber. Particularly, this nerve fiber will release. This nerve fiber will release GABA. It will release GABA. GABA is, what is GABA? What is GABA? GABA is it is a type of neurotransmitter, right? इसके बारे में अपन डिटेल में देखे ऑलरेडी. GABA is a inhibitory neurotransmitter. Okay. This nerve will release GABA. Clear? And now see this nerve, the presynaptic nerve. This nerve, मान लो this nerve will release stimulatory neurotransmitter like aspartate and glutamate. मान लो यहाँ पे aspartate release हो गया. Aspartate got released in the postsynaptic nerve. Aspartate, I'll write as A. And glutamate is also released, G. Aspartate and glutamate both are what are they? Very good. Excitatory neurotransmitters or stimulants. See, when the aspartate and glutamate releases into the synapse, it should go and bind on the receptor, right? On the postsynaptic nerve fiber, we have certain receptors. There is a receptor called NMDA. N-methyl D-aspartate. The name of the receptor is NMDA. Okay. Let me draw here NMDA. Clear? And the next receptor is AMPA. 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 So these are two receptors. These are two receptors which are located on postsynaptic nerve. Okay, now you see, everybody should concentrate. Aspartate and glutamate both are releasing. See, NMDA receptor and AMPA receptors will have the affinity sites. They will have binding sites of both aspartate and glutamate. When NMDA receptor is activated, याद रख लो, NMDA receptor is activated either by AMPA or by glutamate. It depends. मान लो this NMDA receptor is activated by aspartate. Okay, aspartate has bound on the NMDA receptor, and this NMDA receptor got stimulated. Immediately after stimulating NMDA receptor, what happens? NMDA receptor is actually, it is having a channel inside the receptor. Its channel will be opened. What is the channel? It is calcium channel. It is calcium channel. Let me repeat the point. When see aspartate is the stimulatory neurotransmitter, right? Aspartate stimulatory action kaisa dikhayega? When aspartate falls on NMDA receptor, NMDA receptor activates and it will open calcium channel. And when it opens calcium channel upon activating NMDA, the calcium ions will try to enter into the cells. Now, when calcium ions enters into the postsynaptic nerve, what does it mean? Depolarization of postsynaptic nerve or stimulation of postsynaptic nerve. In last class I told depolarization, squeezing or stimulation, all these things. Depolarization causes stimulation, depolarization causes congestion, depolarization causes contraction. All these are the synonyms for stimulatory actions, okay, or depolarization action. Dekho, when calcium enters into the cell, depolarization occurs, and further the neurotransmitter action will be sent to the tissue, and on the tissue again the action will be stimulated.
Through this mechanism, aspartate is considered as excitatory neurotransmitter. aspartate का एक्शन समझ गए सब लोग? aspartate का एक्शन समझ गए सब लोग? yes, clear? No, now you see. Now next excitatory neurotransmitter is glutamate. अब यहाँ पे aspartate release हो सकता है, glutamate or whatever it may, but whenever aspartate releases, you should not forget the action. Now मान लो if glutamate is releasing in the synapse, glutamate will go and fall on the AMPA receptor or NMDA receptor. अब देखो AMPA receptor के बारे में डिस्कस करेंगे. If AMPA receptor is activated by excitatory neurotransmitter, what happens? The AMPA receptor will be AMPA receptor is having sodium channel. AMPA receptor is associated with sodium channel. When AMPA receptor activates, it will open sodium channels and sodium will enter into the cell. Same like calcium, same like NMDA. Okay, when AMPA receptor activates, what happens? Sodium will enter inside. Sodium is also a cation. Sodium is also causing depolarization, and further it will stimulate the postsynaptic nerve. Clear everybody? Clear everybody? Clear everybody? अब देखो ये पोस्ट सिनेप्टिक नर्व के ऊपर स्टिमुलेटरी रिसेप्टर्स वी हैव सीन. स्टिमुलेटरी रिसेप्टर के नाम क्या है? NMDA एंड AMPA. Along with this NMDA and AMPA receptor, there is another receptor. याद रख लो सब लोग. It is the barbiturate benzodiazepine chloride channel associated complex receptor. उसका नाम क्या है? Barbiturate benzodiazepine chloride ion channel complex receptor. Is क्यों we call it like that? Because see, this is a complex receptor. First of all, the complex receptor will have 3 subunits. It has 3 subunits. Yeah, just try to understand this concept. It is very easy and very important. We have discussed about NMDA receptor and AMPA receptor. ये भूल जाओ अभी. NMDA receptor, AMPA receptor, excitatory receptors थे, उसके एक्शन समझ गए. Now the third receptor on the same postsynaptic nerve in the brain is there is a complex receptor. The complex receptor is associated with chloride channel. This complex receptor is associated with chloride channel. Okay, clear? And this complex receptor has 3 subunits. One is barbiturate subunit, one is benzodiazepine subunit, and the third one is GABA subunit. समझ गए यहाँ तक सब लोग? Understood everybody till here? This complex receptor is having 3 subunits. One is barbiturate subunit, one is benzodiazepine subunit, and one is GABA subunit. When barbiturate comes and binds on the barbiturate subunit, what will happen? Chloride channel opens, and chloride ion tries to enter into the cell. What happens if chloride ion enters into the cell? Yes, hyperpolarization. That means it is opposite action to the depolarization, right? अंदर पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन, कैटायन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया तो उसको क्या बोलते हैं? डिपोलराइजेशन, राइट? और डिपोलराइजेशन और स्टिमुलेशन. नाउ if chloride ion opens and if chloride tries to enter into the cell, what chloride ion does? It will try to decrease the positive ion concentration and it will try to increase the negative ion concentration. नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने की कोशिश करेगी, anion concentration बढ़ाने की कोशिश करेगी. If anion concentration increases in the cell, that means cell will not be stimulated or cell will be relaxed. Yes or no? So when barbiturate is given, barbiturate binds on the barbiturate site of the receptor and it opens chloride channel. Chloride ions enters into the cell and it will relax the CNS or brain, and through that barbiturates are considered as CNS depressants. Yes or no? Barbiturate CNS depressants कैसा ऐड करते? Because of opening the chloride channel. Now second one is benzodiazepine. See, one more subunit on the receptor is benzodiazepine subunit, right? When patient is taking benzodiazepine will come and bind on this benzodiazepine subunit, and when it is stimulated, same like barbiturate, it will open chloride ion channel and it will enter into the cell, and through that it will again increase hyperpolarization or negative ion concentration increases in the cell, and through that it will relax. And third subunit is GABA subunit. Same action like barbiturate and benzodiazepine. When GABA which is released from the GABAergic receptor से जब GABA release होगा, GABA goes and binds on the GABA subunit of the complex channel of the complex receptor,
and what happens, it will open the chloride channel, and chloride ion will enter into the cell, and same action seen as depression. That's why GABA is considered as inhibitory neurotransmitter. It is inhibiting the stimulatory actions, right? That's why GABA is the natural inhibitory neurotransmitter. GABA की एक्शन, बार्बिट्रेट की एक्शन, बेंजोडाइजेपिन की एक्शन, समझ गए सब लोग? Did you all understand? See, in certain textbooks, in some textbooks, it will be like this. I have taken this image from the KD Tripathi textbook. Okay, KD Tripathi और online में बहुत सारे standard textbooks में the receptor, complex receptor will be like this. This is the schematic receptor of GABA A benzodiazepine barbiturate receptor chloride channel complex receptor बोलते हैं इसका नाम. Okay, see, it has 5 sub units actually. एक एक का एक एक सब यूनिट है, बट 5 सब यूनिट्स वो सब याद करने की जरूरत नहीं है. सिंपली वॉट एवर द सब यूनिट इज, मेनली बार्बिटूरेट विल बी बाइंडिंग ऑन बार्बिटूरेट साइट, GABA will be binding on GABA site, and benzodiazepine will be binding on benzodiazepine site. We have 3 sites, right? Number 1, number 2, and number 3. Clear? Clear everybody? Barbiturate site is there, GABA site is there, and benzodiazepine site is there. These are 3 important sites. फिर उसमें अल्फा बीटा रिसेप्टर और बीटा सब यूनिट, अल्फा और गामा सब यूनिट, वो सब it is not necessary for us. For simple understanding, this complex channel is having 3 subunits of receptors. One is barbiturate subunit, barbiturate benzodiazepine subunit, and GABA subunit. बार्बिट्रेट साइट के पास बार्बिट्रेट बाइंड होगा, GABA साइट के पास GABA बाइंड होगा, और बेंजोडाइजेपिन के पास बेंजोडाइजेपिन साइट बाइंड होगा. These 3 is having same action. Any of these 3 moieties, any of these 3 compounds binds on their own subunit. What happens? Chloride channel opens and chloride will enter into the cell. And when chloride enters into the cell, what will happen? It will try to depolarize the cell or cell membrane or intra. Yes, hyperpolarize. Did I tell you depolarization? It causes hyperpolarization. When chloride ions enters into the cell, it causes hyperpolarization, not depolarization. Okay, I might have misspelled. Okay, चलो, तो सब लोग मैकेनिज्म समझ गए यहाँ पे. It is very easy to understand. यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. It is not that confusing. अगर टेक्स्ट बुक में पढ़े तो आप ये इमेज देख के आपको कंफ्यूज लगेगा. Now it is clear, I think. Everybody clear now? Now you see. Very good question. सब लोग ध्यान दो यहाँ पे. Just this is a cell membrane भाई. This is cell membrane. All cell membranes are made up of phospholipid bilayer. Here you can see the image depicted here. Imagine this is extracellular matrix or extracellular fluid, and this is intracellular fluid. Clear? अब देखो, if entry of positive ion inside the cell is called depolarization. Entry of positive ion inside the cell is called depolarization. And same, whatever positive ion entered into the cell, after some time these positive ions will go back to the extracellular fluid. That is called repolarization. जो भी पॉजिटिव आयन्स अंदर गए थे डिपोलराइज करने के लिए, फिर से वापस आ जाएगा. दैट इज कॉल्ड रिपोलराइजेशन. नाउ अगर रिपोलराइजेशन ज्यादा हो गया तो क्या बोलते हैं? If repolarization is continued, what will happen? If repolarization is continued, what will happen? Anybody from the class? If repolarization is continued, what will happen? Obviously, the sodium or the positive concentration decreases in the cell and negative concentration बढ़ना शुरू हो जाएगा. That is also called hyperpolarization. याद रख लो, removal of positive ions, excessive removal of positive ions from the cell is called hyperpolarization, or entry of negative ions inside the cell is also called hyperpolarization. See, सब लोग यहाँ पे ध्यान दो. Okay, सब लोग यहाँ पे ध्यान दो. Just इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. This is 0 millivolts, and this is minus 90. This is minus 70, and this is minus 60 मान लो. और यहाँ पे this is not 0, but this is minus 100 मान लो. Okay,
सी सब लोग ध्यान दो यहाँ पे, ऑलवेज मेम्ब्रेन विल बी एट रेस्टिंग पोजिशन इफ मेम्ब्रेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज -70. एक चीज माइंड में ध्यान रख लो, इफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज -70 मिली वोल्ट्स, मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर और मिली वोल्ट्स, अगर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर या सेल के अंदर या सेल के अंदर, मेनली सेल के अंदर, if cell inside the cell, if the concentration of positive ions or negative ions is showing -70 millivolts, if it is showing -70 millivolts, that condition is called resting membrane or resting membrane potential. resting membrane में रहता, I mean resting position में रहता. It is very easy and very simple, don't make it complicated. मेरे को समझाने को थोड़ा दिक्कत हो रही, but still try to understand. See, if cell membrane is at -70, that condition is considered as resting membrane potential, right? Yes or no, Prajwal? अगर -70 के पास है तो resting position पे रहता. If the same resting position is increasing positive ion concentration, if it reaches to -60, that means what does it indicate? What does it is called depolarization. -70 से -60 गया बोले तो उसका मीनिंग क्या है? पॉजिटिव आयन अंदर गया, पॉजिटिव आयन बढ़ गया. समझ रहे आप? -70 से -60, if it is becoming -60, that means it is increasing positive ion concentration. It is increasing positive ion concentration. That means it is simply depolarization. It is simply depolarization. -70 से 60 गया तो उसको depolarization बोलते. -70 से फिर से देखो, if from -70 if it is going to -90, what is its meaning? Hyperpolarization. Very good. Positive ion concentration is decreasing and negative ion concentration is increasing. Clear everybody this point? अब यहाँ पे देखो, अब देखो -70 पे था पहले, cell was at resting position. Immediately what happened? Positive ions tried to enter into the cell and it became -60. That is depolarization. And the same positive ions which entered into the cell, again they came back. -60 से फिर क्या होगा? -70 हो जाएगा. उसको क्या बोलते हैं अपन? रीपोलराइजेशन बोलते हैं. इफ द सेम जो भी पॉजिटिव आयंस अंदर है, that will start excreting out. Further it will start excreting out. So what happens? From 70 it will go to -90. That is called hyperpolarization. Hyper means excess removal of positive ions outside the cell or excessive entry of negative ion inside the cell. If it becomes more than -70, that is considered as hyperpolarization. वो -80 गए तो भी उसको hyperpolarization नहीं बोलते. Okay, understood everybody? If from -70 if it is going to 65, -65, even that is also considered depolarization. Okay, but यहाँ पे slight depolarization रहेगा और -60 के पास ज़्यादा रहेगा. If it goes to -50 को चले गए तो फिर से depolarization बहुत ज़्यादा हो जाएगा. Rapid contractions दिखेंगे वहाँ पे. Clear everybody? I think दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू. अब उसके बारे में डिटेल में सर ये मिली वोल्ट्स कैसा देखते हैं, उसका क्या मैकेनिज्म है, वो सब समझा बोले तो आई कांट एक्सप्लेन बिकॉज आई जस्ट रिमेंबर इन दिस वे, यू ऑल्सो रिमेंबर इन दिस वे. क्लियर? -70 याद रख लो, इट विल बी इन रेस्टिंग पोजिशन ऑलवेज. रेस्टिंग पोजिशन से फिर ज़्यादा रेस्टिंग पोजिशन में चले गया तो फिर पेशेंट मजिल्स पूरे रिलैक्स हो जाएंगे. ओके, आई थिंक दिस मैकेनिज्म इज क्लियर टू यू ऑल. यस, क्लियर एवरीबडी? नाउ यू सी. One point I would like to add here, if benzodiazepines are given to the patient, benzodiazepines के examples देखे अपन already. Best example I'll take here, lorazepam. Okay, just मान लो I have given lorazepam to the patient. What lorazepam will do in the body? Lorazepam will go and bind on the benzodiazepine subunit of the complex receptor. It will open all chloride ions and it will try to cause hyperpolarization. And by causing hyperpolarization, it will relax the all nerve muscles and all, and it will cause CNS depression, and by that it will show either sedative effect or hypnotic effect. Clear? अब देखो specific actions of benzodiazepines. Number 1, it will show sedation and hypnosis. Low doses में sedation action दिखाएगा, high doses में hypnosis दिखाएगा. Okay, depends from drug to drug. This is one basic, very very basic action of benzodiazepines on the body. And very very important point, benzodiazepine का main drug of choice or main indication of benzodiazepine is if anybody is having short term
short term insomnia. In last class I told short term insomnia, long term insomnia, okay, and what I told rebound insomnia. Sune, okay, in short term insomnia, if patient is having short term insomnia किसको बोलते हैं? अप टू 3 डेज अगर पेशेंट को नींद नहीं आ रही तो उसको अपन शॉर्ट टर्म इंसोम्निया बोलते हैं. यस आर नो? आर यू ऑल फॉलोइंग मी? आर यू ऑल फॉलोइंग मी एवरीबॉडी? यस यस, सुनो अब देखो. बेंजोडायजेपिन्स और ड्रग ऑफ चॉइस इन शॉर्ट टर्म इंसोम्निया. याद रख लो एक बात, अगर किसी भी पेशेंट में लॉन्ग टर्म इंसोम्निया है तो वो कंडीशंस में अपन क्या देते हैं? इन दैट कंडीशंस बेंजोडायजेपिन्स आर नॉट गुड चॉइस. दे आर नॉट गुड चॉइस. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सेडेशन हिप्नोटिस के बारे में पढ़ते टाइम पे यू हैव टू रिमेंबर बेंजोडायजेपिन्स और ड्रग ऑफ चॉइस इन शॉर्ट टर्म इंसोम्निया, but they are not good choice in long term insomnia. Why? Can anyone tell why they are not good choice in long term insomnia? Long term insomnia का मीनिंग क्या है? लॉन्ग टर्म इंसोम्निया का मीनिंग क्या है? बेंजोडायजेपिन शुड बी गिवन टू द पेशेंट क्रॉनिकली, एवरीडे देते रहना पेशेंट को. लॉन्ग टर्म मीन्स थ्री वीक से लेकर 3 मंथ्स, राइट? और यस, 3 वीक से लेकर 3 मंथ्स तक पेशेंट को नींद नहीं आती, उसको अपन लॉन्ग टर्म इंसोम्निया बोलते हैं, राइट? तो वहाँ पे 3 मंथ्स 4 मंथ्स तक पेशेंट को डोज देते रहना. So what's happening? Benzodiazepine, long-term use of benzodiazepines may cause tolerance, They may cause dependence, and they also may cause क्या बोलते हैं, hangout symptoms. So because of these three reasons, benzodiazepines are not good choice in long term insomnia. How many of you understood this point? Benzodiazepines are not commonly suggested for long term insomnia. देखो, what do you know about tolerance? Anybody from the class, what do you know about tolerance? Vicky, are you sleeping? Very good. So your answer is absolutely true. बराबर बोले आप. सी, टॉलरेंस किसको बोलते हैं? स्टार्टिंग वी हैव गिवन 5 mg, ओके. 5 mg क्रॉनिकली दिए, 1 महीना दिए, फिर नेक्स्ट मंथ 6 mg दिए, फिर नेक्स्ट मंथ 9 mg दिए, 9 mg. एंड एट द एंड इफ 10 mg इज ऑल्सो गिवन, 10 mg दिए तो भी पेशेंट को एक्शन नहीं दिखे. स्टार्टिंग 5 mg से नींद आ जाता था पेशेंट को, अभी क्रॉनिकली देते गए तो क्या हुआ? 10 mg भी काम नहीं कर रहा पेशेंट को. 10 mg is also not giving sedative action for this patient. That type of drug resistance is called tolerance. Okay, and the next, because of this ये होने के chances है, that's why अपन long term insomnic patients को नहीं देते. And number 2, dependence होने के chances ज़्यादा है. Dependence means 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीने 2 महीने दिए तो 3rd month 4th month and 5th month पेशेंट को कंपलसरी डायजेपम या बेंजोडायजेपिन चाहिए करके बोलेगा. दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंस. डिपेंड हो जाएगा ड्रग के ऊपर. ड्रग लिए तो नींद आती, नहीं तो नहीं आती. कंपलसरी नींद के लिए पेशेंट को ड्रग चाहिए. ओके, दैट इज डिपेंडेंस. एक्चुअली यहाँ पे डिपेंडेंस, जो भी ड्रग्स को डिपेंडेंस चांसेस ज़्यादा होगा तो वहाँ पे टैपरिंग करके डोज कैलकुलेट करके बराबर से ट्रीटमेंट रोकना है. ऐसा करे तो डिपेंडेंस रोक सकता है, नहीं तो नहीं. ओके, इसके बारे में डिपेंडेंस कैसा कम करते हैं उसका भी एक स्ट्रैटेजी है, दैट विल डिस्कस. एंड समटाइम्स पेशेंट विल हैव हंगआउट सिम्टम्स. हंगआउट्स मीन्स सुबह सुबह उठने के बाद डोज की एक्शन, ड्रग एक्शन कम होने के बाद पेशेंट विल हैव सिवियर हेडेक, पेशेंट विल हैव नॉसिया, पेशेंट विल हैव वॉमिटिंग्स, स्टमक पेन. ओके, दोज आर द सिम्टम्स ऑफ हैंगआउट सिम्टम्स. ओके, वैसे होते रहता. सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन इट इज़ नॉट गिवन इन लॉन्ग टर्म इंसोम्निया. ओके, और शॉर्ट टर्म इंसोम्निया में भी अपने को रीजन है. इट विल शो वेरी लिमिटेड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन. ज़्यादा थोड़े आई मीन 1 वीक 2 वीक्स दिए तो पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कम चांसेस होने के चांसेस है. क्रॉनिकली ऐसे देते गए तो क्या होगा? 3 months 4 months 5 months रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होने के चांसेस है, बिकॉज पेशेंट इज गेटिंग टॉलरेंस एंड पेशेंट इज टोटली डिपेंडेंट. सो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होने के चांसेस है. दैट ऑल एडवर्स इफेक्ट्स आई एक्सप्लेन यू. सी, बेस्ट benzodiazepine main action is sedation and hypnotics, and for this action particularly benzodiazepines are used for short term insomnia. Clear this point everybody? Clear? And next is benzodiazepines also will be useful as anticonvulsant. If anybody is having convulsions, these benzodiazepines will go and act on benzodiazepine site of complex receptor, and it will cause hyperpolarization and it will decrease these symptoms. See, just now I explained you the actions of aspartate and the actions of glutamate. aspartate and glutamate का एक्शन क्या है
What is the action of aspartate and glutamate? What is the action of aspartate and glutamate? Yes, all excitations actions, stimulatory actions, all excitation actions, right? शिवानी, करीना, सुन रहे सब लोग? Are you all following? Aspartate and glutamate actions, what they'll do, they will show excitations, right? And what is the action of GABA? What is the action of GABA? It will show all inhibitory actions. It will show inhibitory actions. अब ध्यान दो सब लोग, अब ध्यान दो सब लोग, inhibitory actions, inhibitory actions. किसी भी पेशेंट में, किसी भी पेशेंट में aspartate और glutamate एक्शन बढ़ गई तो क्या होगा? aspartate और glutamate एक्शन बढ़ गई तो क्या होगा? Very good. Patient will have stimulatory excitations and patient will have simply patient will have convulsions. Convulsions. ज़्यादा हो गए तो नहीं. यहाँ पे aspartate and glutamate activity is causing convulsion and immediately this convulsion is stopped by GABA. That convulsion is stopped by GABA. So always in our body aspartate बढ़ेगा तो GABA भी बढ़ेगा, aspartate कम होगा तो GABA भी कम होगा. So always these both stimulatory and inhibitory neurotransmitters they are existed in normal ranges. Okay, अगर aspartate glutamate बढ़ेगा तो GABA भी बढ़ेगा. They should travel along with both the concentrations. Same like insulin and glucagon. Insulin activity बढ़ गई तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा, ग्लूटामेट ग्लूकागन एक्शन बढ़ गई तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा. जितना भी इंसुलिन रिलीज चाहिए उतना भी अपने को ग्लूकागन रिलीज होगा. इन द सेम वे हियर आल्सो whatever concentration of aspartate or glutamate is increasing, GABA action also will be increasing. If sometimes if GABA is decreased and aspartate and glutamate is increased, patient will develop convulsions. Clear? aspartate glutamate ज़्यादा हो गया, GABA कम हो गया तो पेशेंट को कन्वर्जन आ जाएगा. सिंपल. अगर GABA बढ़ गया, if पेशेंट को GABA एक्टिविटी बढ़ गया and aspartate and glutamate decreased, what will happen? Patient will have all inhibitory actions, relaxations. Patient will sleep. Patient will sleep. See, simple. There is a condition called epilepsy. You will study. Second year students will study in your third year or in your second year maybe. Epilepsy करके एक disease condition है. Have you heard about epilepsy, Prajwal? Epilepsy. Epilepsy. Have you heard about epilepsy? हाँ. Epilepsy is the condition where patient's excitatory neuron activity. That means excitatory aspartate and glutamate activity बढ़ जाएगा और GABA एक्टिविटी कम हो जाएगा. सिंपल. दैट इज कॉल्ड एपिलेप्सी. व्हाट इज एपिलेप्सी? व्हाट इज एपिलेप्सी? व्हाट इज एपिलेप्सी? एलिवेटेड एक्शंस ऑफ aspartate and glutamate and decreased actions of GABA. Simple. That is called epilepsy. Elevated excitation activity and decreased GABA activity. तो अपन एपिलेप्सी में क्या करते देखो. In epilepsy, what we will try to do? We will try to increase the GABA activity. We will try to increase the GABA activity by this receptor. Which receptor? This receptor. We will try to increase the GABA activity. GABA activity directly increasing chloride ions, barbiturate and benzodiazepine. All these three subunits will cause same action like GABA. So we have GABA analogs, we have barbiturates and benzodiazepines. All these drugs are also considered as anti-epileptic drugs. So anticonvulsant action is also one action which is shown by benzodiazepine. Clear everybody? Clear everybody? आप लोगों को समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा कि आई एम शाउटिंग लाइक एनीथिंग? आर यू ऑल फॉलोइंग मी? वेरी गुड, वेरी गुड. अब देखो, अब मजा आएगा. देखो, देर इज अनदर एक्शन ऑफ बेंजोडायजेपिन. सी समटाइम्स इन डायग्नोस्टिक, some diagnostic tests, for example if patient is undergoing endoscopy is the technique where we send some endoscope cameras into the gastric tract, either through rectal cavity or through oral cavity or through nasal cavity, जो भी है. So inside the GI tract, from the duodenum to the small intestine, stomach and all, we will try to observe, we'll examine the internal environment conditions. अंदर पेप्टिक अल्सर है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इकोलाई इन्फेक्शन है, रप्चर है, सेल डैमेज, कैंसर इज देयर, और म्यूकोसल सब म्यूकोसल लेयर बराबर है नहीं है. एवरीथिंग विल बी एग्जामिन्ड इन डिटेल इन एंडोस्कोप. ओके, एंडोस्कोपी में टेस्ट करते टाइम पे अगर गैस्ट्रिक मोटिलिटी बढ़ गया और गैस्ट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ गया तो क्या होगा? इन एंडोस्कोपी, इफ पेशेंट्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंक्रीज्ड, सो व्हाट विल हैपन? वी कांट प्रॉपरली एग्जामिन द पेशेंट्स internal examination. Yes or no? So in that cases, what we do, we will go with benzodiazepines. And when benzodiazepine is given, patient will be sedated or patient will be hypnotized,
and in that case all the muscles, gastric muscles will be relaxed, and it will be very easy for the endoscopy technician to observe the internal tissue. So in certain diagnostic conditions also benzodiazepines are used. Clear everybody? Understood? Doubt नहीं है इसमें? आप देखो, and one more is pre anesthetic agent. एनेस्थीसिया देते टाइम पे प्री एनेस्थेटिक एजेंट जैसा भी अपन वी कैन यूज बेंजोडायजेपिन्स. एक्चुअली मोस्ट ऑफ द एनेस्थीसिया देते टाइम पे बेंजोडायजेपिन नहीं देते. अगर बेंजोडायजेपिन दिए तो क्या होगा? इट विल रिलैक्स ऑल द मसल्स एंड थ्रू दैट आल्सो it will be useful for anesthetic action, or sometimes anesthetic action will be elevated. So वहाँ पे pre anesthetic situations में भी अपन benzodiazepines देते. Okay, and number next one is in anxiety. Benzodiazepines are also having anti-anxiety property. Just now I explained what is anxiety. एंग्जाइटी किसको बोलते हैं? घर घबरा घबरा में रहता, डरते रहता, पाल्पिटेशंस में रहता, पेशेंट कन्फ्यूजन में रहता. Okay, Prajwal had anxiety one time during organic chemistry exam. You were having anxiety, right? Anxiety में चले गए थे, डर के एग्जाम नहीं लिखे, बराबर? Yes or no, Prajwal? So in that conditions also benzodiazepines will be used as anti-anxiety agent. Okay, and one more is as muscle relaxant. In most of the muscle contracting conditions, it is used as muscle relaxant. Smooth muscles, skeletal muscles, पूरे muscle relaxation करेगा, and through this action it will be showing analgesic property. So analgesic जैसा अपन कभी use नहीं करना, because it is having tolerant activity and it is having dependence activity. That's why we will not use, but it is having muscle relaxant property. Acute muscle contraction time पे we can use. Okay, aspiration के time पे, और sometimes अपन क्या होता, abdominal cramps आ जाते हैं एक बार patient को, and back pain, back muscle cramps आ जाते. In that conditions benzodiazepines will be used as muscle relaxant. Actually beyond these drugs we have so many other effective drugs for muscle relaxation, but these also will be having muscle relaxant property. Okay, and to treat alcohol withdrawal symptoms. See, if a patient is already habituated with alcohol and if suddenly patient is stopped with alcohol, एक patient को देखो अल्कोहल पी के क्या होगा, लिवर पूरा डैमेज हो जाएगा. अल्कोहल पी के पेशेंट को क्या होगा, लिवर पूरा डैमेज हो जाएगा. एंड अल्कोहलिक लिवर डिसीज पेशेंट को हॉस्पिटल को लेके आते. अब हॉस्पिटल लेके आके फिर से उसको अल्कोहल नहीं पिला सकते अपन. वी कांट गिव अल्कोहल टू द पेशेंट. सो इमीडिएटली आफ्टर स्टॉपिंग द अल्कोहल, so what patient will have? Patient will have alcohol withdrawal symptoms, right? Alcohol withdrawal symptoms क्या क्या है? Who will tell? Can anybody tell what are the symptoms of alcohol withdrawal? Tremors आ जाते, very good. Tremors, palpitation, headache, sometimes nausea, vomiting, anxiety. Patient will develop anxiety. Patient will develop anger. Okay. Insomnia, very good. Insomnia. All these are withdrawal symptoms of alcohol. तो यहाँ पे अपन बिना अल्कोहल दे के पेशेंट को सुला सकते हैं. अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स को कैसा कम कर सकते हैं? बाई गिविंग बेंजोडायजेपिन. तो अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स को कम करने के लिए भी अपन क्या दे सकते हैं? बेंजोडायजेपिन दे सकते. अब देखो, और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वुड लाइक टू ऐड हियर. इट इज यूज्ड एज मसल रिलैक्सेंट करके आई टोल्ड जस्ट नाउ. There are some conditions where patient will have severe muscle contraction. There is a condition called tetanus. Have you heard about tetanus? Tetanus. What is tetanus? Very good. Usually it is a very very common bacterial infection. It is a bacterial infection. अपने environment में already Clostridium tetani करके एक bacteria है. If that bacteria is infecting our body, what will show? It will produce one toxin. It will produce tetanus toxin. That Clostridium tetani bacteria produces a very very dangerous toxin. That toxin will cause severe muscle contractions. हाथ पैर पूरे घट्ट हो जाते. Severe contractions of hands, legs and muscles. See, अगर tetanus toxin ज़्यादा हो गया, if patient has jaw block करके condition है, jaw block. Patient का दांत पर चाप के suddenly patient's mouth will be closed. Sudden block हो जाता है because sudden contractions of muscles will be seen. Patient can't open their mouth properly. अपन कितना भी दबा के mouth open करने की कोशिश करें तो भी mouth open नहीं होगा. And in limbs also, limb contractions, हाथ के ऊपर पंच कर लेता है patient. पंच भी open नहीं कर सकते अपन. Okay, so severe contraction of certain muscles usually seen with tetanus. So कभी भी देखो अपने घर वाले में, अपने brothers or sisters or neighbors or anybody, or if our patients, if they are having accidents or scratches or any injury in the mud, चलते चलते गिर गए, गिर गए और इंजरी हो गई,
तो पेशेंट को क्या रिस्क है? पेशेंट इज हैविंग risk of Clostridium tetani infection. So immediately what we have to do? We have to go with TT injection. TT injection is that injection which is a anti-tetanus. Actually tetanus toxoid बोलते हैं, tetanus toxoid, which will show anti actions upon Clostridium tetani. Clostridium tetani टॉक्सिन को अगेंस्ट से यूज करेगा, फाइट करेगा. सो टीटी इज द बेस्ट इंजेक्शन वी हैव टू गिव if patient is having risk just it is a protection, that's it is a preventive measure. एक बार टेटानस आ गया इन्फेक्शन तो अपन टीटी इंजेक्शन दिए तो भी फायदा नहीं है. ओके, एंड टीटी एक्चुअली वही टीटी इज गिवन ऑलवेज. हर एक बार चोट लगी तो टीटी देते, हर एक बार चोट लगी तो टीटी देते, क्यों? एनीबडी? ऑलरेडी टीटी इंजेक्शंस आर गिवन इन स्मॉल एज, immediately after birth, in fifth month or 1 year. It is having one schedule, I don't remember the schedule. उसके एक 6-7 डोजेस रहते. आफ्टर गिविंग दैट डोजेस आल्सो इन अडल्ट, कभी भी अपन अपने को चोट लग गई तो फिर से भी अपन टीटी देते रहते. कितने बार चोट लगे तो जितने बार देते, क्यों? कैन एनीबडी? Very good. Sadav is telling its action is seen only up to 6 months, like that. Yes, it is exactly correct. Exactly, I don't know if it's for 6 months or not. उसकी एक्शन ज़्यादा तक नहीं रहती, 6 मंथ्स और 1 ईयर तक रहती, उसके बाद उसकी एक्शन कम हो जाती. एंड ऑलवेज इफ पेशेंट इज हैविंग इंजुरीज वी हैव टू गिव टीटी एज बूस्टर डोज. वी हैव टू गिव एज बूस्टर डोज. क्लियर? सो टेटानस कंडीशन में आल्सो वी कैन गो विथ बेंजोडायजेपिन. बेंजोडायजेपिन दिए तो मसल रिलैक्स करेगा और उसका टेटानस सिम्टम थोड़ा कम करने के चांसेस है. टेटानस एक बार आ गया तो वो बहुत डेंजर कंडीशन है फर्स्ट ऑफ ऑल, बट इन दैट कंडीशंस वी कैन गो. एंड समटाइम्स इन स्पाइनल इंजरी की वजह से पेशेंट को कॉन्ट्रैक्शंस हो जाएगा, कन्वर्जन्स आ जाएगा, वहाँ पे भी दे सकते हैं. और देर इज अनदर कंडीशन कॉल्ड सेरिब्रल पाल्सी. सेरिब्रल पाल्सी के कंडीशन में भी बेंजोडायजेपिन्स आर यूज्ड एज मसल रिलैक्सेंट्स. So these are different actions of benzodiazepines. Okay, these are actions of benzodiazepines. Now let me add some more points about benzodiazepine. एक एक ड्रग के बारे में डिटेल में देखने से पहले आई विल ट्राई टू, एम्प्टी स्लाइड नहीं आ रहा, कहाँ है? ओके, सी, लिसन एवरीबडी, लिसन केयरफुली. I will try to tell you some adverse effects, ADRs of benzodiazepine. कोई भी पेशेंट बेंजोडायजेपिन ले रहा है तो एडवर्स इफेक्ट्स कौन से एडवर्स इफेक्ट्स आने के चांसेस है? एनीबॉडी फ्रॉम द क्लास? ओके, डिपेंडेंस, वेरी गुड. डिपेंडेंस. और जैनब, यू आर टेलिंग सम. टॉलरेंस, विड्रॉल सिम्टम्स. देखो ये सब जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड, बट मेनली all these are seen only when we go with excessive doses or chronic doses. But in simple acute doses also benzodiazepines will cause some symptoms like simple ड्राउजीनेस. देखो बेंजोडायजेपिन रात एक्शन के लिए ही लेते हैं अपन. वी नीड बेंजोडायजेपिन एक्शन ओनली एट नाइट, बट ड्यूरिंग द डे आल्सो पेशेंट विल बी हैविंग ड्राउजीनेस. जो लोग बेंजोडायजेपिन ले रहे हैं क्लास के अंदर आके बैठे तो क्या होगा? पेशेंट सोते रहेगा, ड्राउजीनेस से रहेगा. So this is one adverse effect only, no? So it is troubling the patient, right? So drowsiness, and sometimes patient will have confusion. Confusion means concentration, loss of concentration. Concentration ज़्यादा नहीं दिखेगा. और एक एक बार क्या होगा बेंजोडायजेपिन्स की वजह से पेशेंट विल हैव ब्लर्ड विजन, BLURRED, ब्लर्ड विजन. अब देखो, ड्यू टू ड्राउजीनेस, confusion and blurred vision, will you suggest benzodiazepines for drivers? Will you suggest benzodiazepines? रिस्क बहुत ज़्यादा है. और यहाँ पे और एक चीज़ देखो, अगर कोई पेशेंट, कोई ड्राइवर बेंजोडायजेपिन ले रहा है, उसके साथ एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह कुछ है और एंटीहिस्टामिन ले रहा बेचारा, बेंजोडायजेपिन एंड एंटीहिस्टामिन दो कॉम्बिनेशन में लिया तो ड्राइवर ड्राइविंग करते करते किसी पोल को या किसी को डैश करके मर जाता, एक्सीडेंट करके मर जाता. इट इज़ वेरी कॉमन, वेरी वेरी कॉमन. You should never forget this drug interaction. Okay, drowsiness, confusion and blurred vision. And one very very important point, amnesia. Sadav Khan will tell what is amnesia. Sadav? Amnesia. Very good. Loss of memory loss रहेगा पेशेंट को. Memory loss means पढ़ते जो, for students particularly, for students who are preparing for exams and all, for that patients benzodiazepines are never given. Okay, and next disorientation. डिसोरिएंटेशन किसको बोलते हैं? अपन लास्ट क्लास में देखे थे, वी हैव ऑलरेडी सीन. डिस
वेरी गुड, लॉस ऑफ कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, ओके, अनेबल टू स्टैंड प्रॉपरली, अनेबल टू वॉक प्रॉपरली, ये सब डिसोरिएंटेशन के हैं. एंड एनीवेज, डिपेंडेंस, ड्रग डिपेंडेंस, टॉलरेंस, विड्रॉल सिम्टम्स, ऑल दिस आर ऑलरेडी वी डिस्कस्ड. एंड सबसे ज़्यादा एंड सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट्स, very important adverse effect with benzodiazepines. Can anyone tell me? Very important adverse effect. Yes, one is left. Anybody from the class? Okay, ये सब CNS depressant के actions ही है. All these are CNS depressant actions. See, one very important is respiratory depression. याद रख लो, respiratory depression is not seen in adults in acute doses, but in chronic doses and in higher doses respiratory depression is seen. मेजरली एक चीज याद रख लो, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन अडल्ट्स में नहीं दिखेगा, बट इफ बेंजोडायाजेपिन इज गिवन, if benzodiazepine is given in newborn babies, or if benzodiazepine is given in pregnant ladies, or if benzodiazepine is given in lactating ladies, what will happen? In neonates or in children and in fetus, it will cause respiratory depression and it will cause very lethal consequences. You should never forget this point. So can we go with benzodiazepines in pregnant ladies? We should never go with benzodiazepines in pregnant ladies because it will cause severe respiratory depression. Okay, yes. So these are some common adverse effects of benzodiazepine. Now let me tell you some doses and some important points about each drug. Yes, benzodiazepines, hypertension, हाँ हाइपोटेंशन कॉज कर सकता है. इट मे कॉज हाइपोटेंशन बट नॉट, सी वी विल ट्राई टू डिस्कस अबाउट ईच ड्रग. एक एक ड्रग के बारे में जस्ट ट्राई टू सी. हर एक ड्रग कॉपी करके पेस्ट करने के लिए टाइम नहीं था मेरे पास. देखो, जस्ट नाउ आई एक्सप्लेन अबाउट डायजेपम. Diazepam is available as oral form, IV form, and IM, and it is also available in rectal form. This is very important. Diazepam is available in rectal form. Rectal form is given in small children. If small children are having convulsions or epilepsy, in that condition we will go with rectal form. Okay, so they are very rapidly important points of this is Sargel textbook. Okay, Shanbhag. So from this Shanbhag textbook you can refer. Always एक दिन में एक क्लास में you will not remember everything. Okay, one more time you can revise this tomorrow. After revising we will try to see. And flurazepam, all these drugs already we have discussed. You try to remember their doses and their importance. They are used in insomnia, they are used in muscle contraction conditions, they are used in anxiety conditions. ये सब तो common ही है. Okay, particularly each drug के बारे में डिटेल में यहाँ पे दिया है. So just try to remember this. Once try to revise this. Go through this textbook. Okay. So mechanism and all we have discussed. Now we will try to discuss about barbiturates. Barbiturates के बारे में next class में देखेंगे. So I think you understood everything about benzodiazepines. कोई doubt है benzodiazepine के बारे में? Anybody any doubts about benzodiazepines? Mechanism is important, indications is important, adverse effects is important. Okay, and benzodiazepine body के अंदर कैसा act करेगा, कहाँ पे act करेगा? Read this case. See. पेशेंट का एज इज 24 ईयर्स. एट द एज ऑफ 24 ये अपने एज का रहता. ओके, ही इज इन डिग्री और मे बी. सो दिस 24 ईयर्स ओल्ड मैन बॉय वॉज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर 3 months. 3 महीने हॉस्पिटल में बैठा. वही बिकॉज ऑफ मोटरसाइकिल इंजरी. अब ये एज में क्या रहता, गाड़ी घुमाना है, लड़की के सामने ओवर एक्शन करना है. ओके, तो क्या करते, नीचे गिर जाते, हाथा पैरा तोड़ देते. ओके, सो किसका भी क्या हुआ, सेम हाथा पैरा तोड़ दिया और हॉस्पिटल में जाके पड़ गया. तो 3 months ही वॉज इन द हॉस्पिटल. ही वॉज इन द हॉस्पिटल फॉर 3 months. वाइल इन द हॉस्पिटल ही डेवलप्ड पैनिक अटैक्स एंड इंसोम्निया. बेचारे को हाथा पैरा टूट गए थे तो पैनिक अटैक आ गया. अब हाथा पैरा टूट गए तो क्या हो गया, कल कॉलेज को कैसा जाऊँ, फिर लड़कियां को कैसे पटाऊँ, हाउ शुड आई शो माई फेस टू दी गर्ल्स करके ही वॉज स्केर्ड. एंड वो पैनिक अटैक करके करके ही वॉज हैविंग इंसोम्निया आल्सो. नाइट टाइम नींद नहीं आती थी सोच के. सो व्हाट डिड इट, he received no psychological support, but he was prescribed with temazepam. Temazepam is one benzodiazepine. Simple. Zepam करके है, Zepam, all Zepams are benzodiazepines, right? Temazepam was given to this patient for insomnia and panic attack without giving psychological support. Without giving psychological support. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, you should remember. पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट नहीं दिया बट टैबलेट दे दिए. इनिशियली 20 mg was given and उसके बाद 20 mg was increased to 60 mg because insomnia was continuing. After discharge from hospital,
he continued to receive temazepam from his primary care doctor, and the dosage was increased over period of years until he was taking 80 mg. देखो, initially he started with 20 mg, इंसोमिया कंटिन्यू हुआ, उसके बाद 60 mg हुआ, 60 mg के बाद डिस्चार्ज होने के बाद भी दूसरे डॉक्टर के पास जाके फिर से प्रिस्क्रिप्शन लिखा लिया, एंड नाउ ही इज टेकिंग 80 mg. इसका मीनिंग देखो, इसका मीनिंग क्या हो रहा है यहाँ पे, पेशेंट इज स्लोली डेवलपिंग टॉलरेंस, पेशेंट इज स्लोली डेवलपिंग टॉलरेंस. ओके, उसका मीनिंग वही है. एंड सी, ईच नाइट लेता था 40 mg 80 mg ले लेता था पेशेंट ड्यूरिंग द डे ऑल्सो. ही लेटर अटेंडेड सेवरल डिफरेंट प्राइमरी केयर डॉक्टर्स ऑब्टेनिंग मल्टीपल टाइमोजिपम प्रिस्क्रिप्शंस. मल्टीपल टाइम्स लेता था, फिर 80 mg से भी ज़्यादा भी लेता था. इट्स नॉट मेंशन्ड क्लियरली. When he could no longer satisfy his need from prescriptions, he took to obtaining temazepam on street, taking large and irregular doses. Prescription से ज़्यादा भी अब वो he used to take. All this time his anxiety levels increased. ये सब टाइम पे एंग्जाइटी लेवल और ज़्यादा बढ़ जाता था पेशेंट को. His behavior became chaotic and he was twice imprisoned. बेचारा मेंटल करता था, पुलिस लेके गए और जेल में डाल दिए, 2 बार डाल दिए. क्यों? बिकॉज ही वॉज डूइंग सम मिस्चीवियस थिंग्स लाइक क्रेडिट कार्ड फ्रॉड करना, दूसरे के पास पैसे लूट लेना, बिकॉज ही वॉज हैविंग बिहेवियरल चेंजेस. वेन ही लास्ट हर्ड ऑफ at the age of 35, he was again buying temazepam illegally, as well as other addictives. temazepam के साथ साथ other addictive drugs भी लेता था at the age of 35. Initially he started tamoxifen at 24. He started with 24 age, and at 35 also this fellow is continuing temazepam illegally without prescription, and इसके साथ addictive drugs भी लेता था थोड़े दूसरे. Okay, he had starting injecting intravenous and was involved in a court case for obtaining money under false pretenses. देखो, एक छोटा कंडीशन 24 ईयर्स में एक छोटा डॉक्टर की गलती की वजह से पेशेंट का लाइफ पूरा जेल में सड़ना पड़ रहा. आर यू ऑल फॉलोइंग द केस? यू अंडरस्टूड? सी, अगर सेम केस मेरे पास आया होता तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू गिव गुड पेशेंट काउंसलिंग टू द पेशेंट इनिशियली, एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट देता था मैं पेशेंट को. रात में नींद नहीं आ रही तो साइकोलॉजिकली सपोर्ट करके पेशेंट को सो जाओ, नो प्रॉब्लम, हिम्मत दिलाते थे भाई. और अगर पेशेंट को नींद फिर से भी नहीं आ रही तो 20 mg स्लोली 20 mg दे के पेशेंट का मैनेज करते थे. एंड इमीडिएटली आफ्टर डिस्चार्जिंग आई वुड हैव स्टॉप्ड द पेशेंट्स कंडीशन स्लोली. बिफोर डिस्चार्जिंग ही टैपरिंग करके पेशेंट का डोज रोक देते थे. वहाँ पे वो नहीं हुआ, टैपरिंग वॉज नॉट डन, डोज वॉज नॉट डिक्रीज्ड, एंड फर्दर व्हाट इट वॉज डन, पेशेंट्स डोज वॉज इंक्रीज्ड, टॉलरेंस बढ़ गया, डिपेंडेंस हो गया पेशेंट, फिर टॉलरेंस आ गया, पेशेंट को डिपेंडेंस भी आ गया, फिर एंग्जाइटी बढ़ गई पेशेंट की, दूसरे ड्रग्स भी लेना शुरू कर दिया, चोरी करना शुरू कर दिया, जेल को जाना शुरू कर दिया, 1 बार 2 बार 3 बार जेल गया, और लास्ट में कोर्ट को भी गया, लाइफ पूरी बर्बाद कर लिया. ओके, सो हियर व्हाट इज आवर अंडरस्टैंडिंग इज, if any patient is been started with any benzodiazepine or barbiturate, we should try to give the dose only up to the required condition. When patient's condition is not, if patient condition is not unable to treat, what we have to do, we have to go with alternative therapies, or we have to stop the therapy by tapering the dose. because यहाँ पे पेशेंट को डिपेंडेंस आ रहा तो इमीडिएटली सी 3 महीने तक दे दिया पेशेंट को, 3 महीने तक दे दिया, एंड उसके बाद फिर से भी ही स्टार्टेड कंटिन्यूइंग द ड्रग इन द प्राइमरी केयर हॉस्पिटल. जो प्राइमरी केयर हॉस्पिटल में जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा था, ही शुड प्रॉपरली चेक द पेशेंट्स हिस्ट्री. पेशेंट्स हिस्ट्री में इससे पहले कुछ बेंजोडाइजेपिन लिया नहीं लिया चेक करना. बिना चेक करे दिस फेलो व्हाट डिड प्राइमरी केयर हॉस्पिटल, दूसरे डॉक्टर क्या करा, ही आल्सो स्टार्टेड प्रिस्क्राइबिंग, दैट फेलो आल्सो स्टार्टेड प्रिस्क्राइबिंग, एंड व्हाट हैपेंड, पेशेंट फिर से डोजेस बढ़ाना शुरू कर दिया, एंड टॉलरेंस आ गया, डिपेंडेंस आ गया, और पेशेंट की कंडीशन डिटोरिएट होते गया, एंड फाइनली he became, or he was jailed. So if we were treating this patient, we would have stopped the patient's drug at the time of discharge, or if we are primary care doctors, we would have taken patient's history properly, and we would have not prescribed the drugs to the patient. Okay, so through that way we can save the patient's condition.